Is it on? Right now it is. Hi everybody, Shreya's back again. Good morning, good afternoon, good evening, good night. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो. So this video is a little different from any other of my videos because बाकी जितने पहले के वीडियोस हैं सब में मैं जिम कर रहा था and I was telling you guys कि ये कर रहा हूँ and all that, like it was like gym vlog type of shit because as I said it's a diary, right? And writing a diary may be a daily thing for you, it's not a daily thing for me. I'm not really a consistent writer, but when I do write it's mostly what I've done, like जो basic चल रहा होता है वही लिखता हूँ मैं, ठीक है? It's not like क्योंकि मेरा डेली स्टैटिस्टिक इफ यू सी कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. जिस दिन कुछ चेंज होता है वो दिन मैं डाल देता हूँ. सो जैसे एक दिन वो उसका था बाइक का, इट्स अ रियली बिग डे फॉर मी, सो मैंने वो डाल दिया. एंड देन अगले दिन आई रियली हैड अ गुड एज फकिंग पंप, राइट? आई रियली हैड अ गुड पंप, वो भी डाल दिया. व्हाटएवर, सो यार Alright, so don't ever ask me questions about regular uploads and shit. जब मेरा कुछ अलग दिन रहेगा मैं डाल दूँगा, नहीं होगा then you can guess कि कैसा क्या उसका दिन. He did gym and yeah, he slept basically. Whatever man, so yeah, this video is a little different from others because इस video में मुझे actually आपसे बात करनी है. I really want to talk to you and tell you something what I just felt this other day. ये जो एक फीलिंग थी मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर हमेशा से रहती है. इस हम कभी कभी इस चीज़ के उस फीलिंग को भूल जाते हैं and it really affects our productivity, it really affects our self image and self growth and self respect मान लो, mental health मान लो, जो भी, like it just affects it, right? Just feeling you, right? It just affects it. So what happened to me was कि कल की या परसों की बात है, बीते हुए कल या परसों की, कि मैं और कुछ दोस्त घर पे थे बिकॉज हमने सोचा था कि बाहर जाएंगे बट बाहर बारिश चालू हो गई एंड घर की भी लाइट चली गई. सो वी लाइक कम्प्लीटली बोर्ड द फक आउट एंड सम क्रेजी शिट हैपेंस जब बोर होते हैं बंदे. तो 4 बंदे यहाँ पे बोर हो रहे थे एंड दिस गाय वाज टॉकिंग अबाउट कि ब्रो लाइक तूने शेष के ब्लॉग देखे, उसकी बॉडी ठीक ठाक है. दूसरा बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है बट दम का है उसमें. एंड दैट्स लाइक द स्विच एंड आई सेड क्या दम नहीं है, आजा भड़ले टाइप. लाइक मैंने बोला आजा भड़ले, बहुत देर तक चलता रहा कि आजा भड़ले, नहीं चल देखते हैं ना, बिकॉज मैं उस बंदे को काफ़ी दिन से देख रहा था कि उस टाइम रिस्पेक्ट मी एंड शिट. आज मेरे मुंह पे आ गया, सो आई सेड फक दैट शिट ब्रो, आज सॉर्ट आउट करते हैं टाइप शिट, राइट? सो वही मैंने उसको बोला कि आजा भिड़ ले. ऑफ कोर्स दैट वाज अ रॉन्ग मूव, बट ओके उसने मना करा. मैंने बहुत देर तक उसको कन्विंस लाइक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट goofy ass ringtone. Just a second man. एक सेकंड में कॉल बैक कर रहा हूँ तो लाइक थोड़ा देर रुक जाओ, कॉल बैक कर रहा हूँ. So yeah, I was trying to get that reaction out of him, get that चल like type shit, that shit out of him. नहीं वो alright, I said you know what, fuck it, let's just bench this shit, alright? Bench करते हैं, जिसने ज़्यादा करा उसने ज़्यादा दम, देख लेंगे किसमें कितना है. So he was like alright, okay. And then we went to my gym and we started benching. And bench में I'm fucking confident, alright? I fucking bench, I don't know कितना, but I do bench a lot. And then he benched around 80 probably, and I benched 90. So like yeah, I won and I said कि हाँ भाई जीत गया मैं, किसमें दम है? So what he said कि मेरा bench कमज़ोर है, कुछ और करो. I said okay, let's do fucking deadlifts, let's do fucking squats. And उसने मना कर दिया. And you know what he said?
He said, let's do fucking push-ups. And let me tell you something about myself. मैंने आज तक push-ups नहीं करे हूँ, right? मैंने आज तक मैंने 2 बार करे हैं. 11th के PE practical में and 12th के PE practical में. That's it, bro. मैंने आज उस कल के पहले मैंने ढंग से push-up नहीं करे थे. And this man went to the fucking floor and dropped down 75 fucking push-ups, alright? 75 fucking push-ups right in front of my fucking eyes. And he said, bro, आज मैं थका हुआ हूँ, वरना मैं 80 कर देता. And I was like, damn, 70 fucking push-ups? Like 75 fucking push-ups? I don't know if I can do it. But you know, अब तो भाई मान सम्मान की बात आ गई थी. तो I went to the fucking floor, and as I मैंने positionally as I kept my hands down on the fucking ground. At that moment I felt that feeling, you know. That moment I felt it. I completely मेरा पूरा brain it was empty at that moment. Nothing. कोई tension नहीं, कोई thought नहीं. Like in my consciousness, fuck the brain. In my fucking consciousness, it's like fucking meditation, right? It's like if you have ever meditated, you go into a state जब बहुत time आप जब meditate करते हो, एक state आता है जब आप बहुत ज़्यादा deep में चले जाते हो. And it's like fucking death. You don't have any thoughts, you don't have anything until somebody wakes you up कि hey, get the fuck up. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा deep में जा चुके रहते हो. It's like a deep slumber, you know. It's you just don't have any thought. I didn't had any thought. I didn't had any fucking thought. मैंने नीचे जाने से पहले मैं fucking before taking the position, I said to myself कि 80 हो रहे हैं आज, 80 हो रहे हैं आज. That is all I said to myself. And उसके बाद I went down, no ifs, no buts, nothing. I continuously did 50 fucking push-ups. Took a break जिसमें मैंने अपने हाथ नहीं हटाए. अगर आप if you do push-ups like this and this is my waist, कमर, तो मैंने उसको हल्का सा ऐसे कर लिया just to take a little rest because कल yesterday I actually did back, so मुझे दर्द हो रहा था काफ़ी. Of course वहाँ पे मुझसे fatigue हुई है तो दर्द हो गया. and I have to keep you have to keep your back straight while doing the push-ups, right? So 50 करते करते kind of hurt it, so मैं probably 5 सेकंड का break लिया. I kept my position but just कमर थोड़ी सी bend करी just to give a little rest to my fucking lower back. Then started doing again and reaching about 56. The guy जिसको उस बंदे ने बोला था कि इसमें कोई दम नहीं है, उसने मुझे बोला कि चल 60 तक रेस्ट मत लेना. And I said fine. And मैंने 60 तक रेस्ट नहीं लिया. मैंने 60 पे जब रेस्ट लिया तो the guy who challenged me started counting from 55. So I argued कि what the fuck is this? You just didn't count my 5 reps. And he was like, नहीं, you just did 50. You have did 55. There's no 60. And तूने 55 नहीं करे या 60 नहीं करे. Done fun. And I said, you know what? Fuck you, alright? I said, fuck you. 5 count नहीं करे, मत कर. I'm gonna do 5 more, alright? So I went down again. Arguing के बाद I went down again, dropped about 30 more. So 50, 60, actually 20 more. Continuously 20 more, 70. Around 70, I made a stop on the on the position, another rest because 70 हो गया था. And at that moment, again no thoughts, no ifs and buts कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अगर मैं नहीं कर पाया तो ये होगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो होगा. And I'm gonna explain कि अगर मगर क्यों नहीं था. But the main thing was कि अगर मगर नहीं था. And जब मैं 70 पे रुका, I was just thinking about okay, रुका हूँ मैं, just take a deep breath in, deep breath out, do it for 5 times, get the fuck back in, and वापस मुझे करने हैं. So I just did the thing, and when I dropped for the 71st push-up, 71st, at some point अब नीचे जाते हो and your elbows are a little behind from your chest. At that moment, I felt the fucking burn. What the fuck is up with my PC? You alright?
Shut the fuck up. Alright, bro, man. So I felt the fucking burn in my chest, like right here, not even like here, like right here, and like my chest was on fire. My triceps were completely burned, like on fire, right on fire. इसके like ये करने से पहले I have benched 90 kilos, right? I have benched 90 kilos, तगड़ा fatigue है, and again like इतना ज़्यादा resistance वाला overload आ रहा है, so everything was on fire. I did 80 continuous push-ups, and the guy said, okay, all right, खत्म हो गया, चलो उठ जा भाई, हार गया मैं. And just to shut his mouth, just to like fucking, just to put it in his fucking face, all right? I said, you know what, fuck this shit, 5 और. So when I did my 80th push-up, I went back down again, did 5 more. So according to the fucking game, I did 85, and according to real counting, I did 90 fucking push-ups. So I benched 90 kgs and then did 90 fucking push-ups. And all of this was done, what I believe, all of this was done just because I didn't had any thought in my fucking head कि अगर ये नहीं हो पाया, ifs and buts and you know what, fuck all that bullshit. That is what I was thought. Like I didn't even thought कि fuck all that bullshit. मेरे मन में कुछ था ही नहीं, bro. I'm gonna tell you the fucking real shit, alright? मेरे मन में कुछ भी नहीं था. I didn't thought ifs and buts. अगर नहीं हो पाया, like अगर मैं नहीं करा तो ये बोलेगा. अगर तो था ही नहीं, bro, मेरे मन में. Like I didn't had any fucking excuse because what I realized is अगर आप realize this कि अगर या buts, like in your fucking head, like if you think आगे क्या होगा if I didn't do it, if and may and what and all this bullshit, just keep it fucking aside, alright? What it made me realize was कि if you really want to do something, if you're really trying to achieve something, you really want to fucking just have it, just be successful in any kind of way, you just have to quit thinking and do the fucking efforts. Like everything, right? Like, alright, real talk. Agar like I don't know, man. I just felt it and I just told it to you. It is the realest feeling, man. मैं कैमरे के सामने आके कोई झूठ नहीं बोला. I'm not making shit up, alright? I just told you what I felt, and this is the real shit, man. If you really want to do something, if you like, you just have to fucking stop thinking. अपने आप को you have to like, you know, just quit giving the fucking excuse कि अगर नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा, अगर नहीं हो तो मुझे ये बोलेगा. This sentence की starting जब अगर से हो रही है, just quit that fucking sentence, bro. Like just don't even fucking think of it. If you're thinking चलो ये करना है, don't think करना है. Think ये होगा and ये हो गया, ये होगा and ये होगा. It's not like मुझे करना है. It's like okay, आज ये हो रहा है, आज ये हो गया. मुझे पढ़ना है, मैं if I have a goal कि मुझे पढ़ना है, then I'm gonna think okay, मुझे पढ़ना है and ये हो. Bro, I just fucking मैं हिंदी भूल गया, bro. मेरा कुत्ता fuck. You know what? If I'm thinking, alright, if I'm thinking कि आज मुझे पढ़ना है, then I'm gonna think कि ठीक है, आज मुझे पढ़ना है, आज मैंने पढ़ लिया. Fuck, bro, मैं हिंदी actually भूल गया. Fuck all that shit, man. You feel me, right? You feel me. Just future tense भूल जाओ उसका. Remember the present tense कि हाँ, आज अगर होना है तो आज ये हो रहा है, आज ये हो गया. आज अगर मुझे पढ़ना है तो I'm gonna think आज मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं पढ़ रहा हूँ. It's gonna be a fucking statement. Yes, I got it. It's gonna be a fucking statement. It's gonna be a fucking announcement to yourself. आज मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैंने पढ़ लिया. आज मैं पढ़ रहा हूँ. That's the present tense. If I'm not fucking studying right here, I'm gonna say to myself, आज मैं पढ़ रहा हूँ and मैं draw खोलूँगा, book निकालूँगा, पढ़ूँगा, and then the next sentence I'm gonna say to myself is आज मैंने पढ़ लिया. उसके बीच में you don't have to like you shouldn't think of anything, bro. ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ, थोड़ा म्यूजिक चला लूँ क्या, यहाँ चले जाऊँ क्या, मम्मा से ये चीज़ पूछ लूँ क्या, पानी पी के आता हूँ ना. Shut the fuck up. Like for me,
मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ चीज़ों पे, I'm gonna be fucking honest, right? मैं कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ चीज़ों पे. बट फॉर मी व्हाट वर्कड इज, अगर मैं कोई चीज़ करने बैठ रहा हूँ, लेट्स से आई वांट टू डू इट फॉर 2 hours, मैं उस 2 घंटे में पानी नहीं पीऊँगा. I'm not gonna go to take a leak, to take a piss. I'm not gonna check my phone. मैं फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दूंगा या लाइक इस ड्रॉअर में डाल दूंगा. मैं I'm gonna be fucking tunnel vision, you know. And that is what you should do. Be fucking tunnel vision for any and everything you're doing. And if you want to achieve some kind of success in it. No agar, no ifs, no buts, just fucking you and your goal. Like this is you and you have this tunnel vision and that is your fucking goal. Have you seen horses? Like उनके आँखों पे like ऐसा बांध देते ताकि वो साइड बना दे कि just them and their fucking finish line. That's what you have to be, man. That's what you have to be. And that is what like वापस से मुझे realization हुआ like इस छोटे से incident से. It was such a small incident, you know, कि बस आपने किसी को हरा दिया, but when you really think about it, जब मैंने बीच में रियलाइज किया कि मेरे को कोई थॉट नहीं आ रहा था, इतनी छोटी सी चीज़ से मुझे इतनी बड़ी चीज़ लाइक समझ में आई. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, टू एनी एंड ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस. जस्ट बी फकिंग टनल विजन इन एवरीथिंग दैट you want to achieve, anything and everything you want to achieve in life, because yeah man, that's the only way, that's the only fucking way. Be fucking tunnel vision. And I hope that you have understood it. जो भी मैंने बोला समझ में आया हो आपके, नहीं आया हो replay this fucking video, right? जो पार्ट समझ में नहीं आया बार बार सुनो, समझ में आ जाएगा. Stupid fuck. And yeah man, that's pretty much it for this video. And the week's been pretty shit. I've not been uploading because मैं अपने घर पे ही नहीं था, क्योंकि as I said पिछले वीडियो में मेरी मम्मा घर पे नहीं रहने वाले हैं. So my dad actually told me कि काम कर, अकेले घर में मत रह, किसी को बुला ले. So I called my brother at my home. He lives near the town, he works there, so उसने घर वहाँ पे लेके रखा है. I told him कि you know just come over and यहीं पे कुछ दिन के लिए रह लो. So he came and we had a lot of fun, lot of booze and lot of butts. And yeah man, the week's been pretty based, the week's been pretty, you know, chill and calm. I'm not gonna fucking say, oh yaar मैंने पूरा week waste कर दिया. No, I didn't waste a fucking moment. I just lived it man. मज़ा आया मुझे, हर एक मोमेंट में मज़ा आया. And of course मैं उसको कैमरे पर नहीं दिखाने वाला हूँ because my parents. But of course man, I lived that moment and I don't regret it. अगर तुमको भले एक हफ्ते कंटेंट ना मिला हो, then fuck you. 10 दिन actually कंटेंट नहीं मिला, so whatever man, fuck you. So yeah, that's pretty much it. New cuts been in, बाल कटवा लिए मैंने because गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी. And yeah man, that's pretty much it for this video. I hope you're fucking working on yourself. And if you're following this journey, then I really appreciate it. I hope that you're growing as well. And yeah, that's pretty much it. Alright, bye bye. See you in the next fucking video जब मैं जिम करा रहूँगा. Bye bye.